Today we will discuss about separation of substances. What do you mean by separation? Separation means you have to sort out the substance. In your daily life, you have notices that you are being separate things from a mixture of material. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर. आपने देखा होगा कि चाय, आप चाय की पत्ती को छानते हो with a strainer. Separating chilies from the poha your mom has made for you. और दलिया, जिन बच्चों को किसी को अगर मिर्च पसंद नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से उसमें से आप क्या करते हो, बाय यूजिंग योर हैंड यू कैन पिक आउट द चिलीज. So you will separate various things from the mixture of a given substance. But what if the material we want to separate are smaller than mango or guava? For example, if you want to separate mango or guava from the basket, तो you will use your hand. आप फटाफट से अलग अलग कर दोगे, बट ऐसे सब्सटेंस को आप कैसे सेपरेट करोगे कि जो बहुत स्मॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि घर पे क्या होता है, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. दूध से हम दही बनाते हैं और फिर दही में से हम मक्खन निकाल देते हैं. तो वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हाँ उठाया, दूध में से मक्खन निकल आया और मक्खन निकला हुआ है और आप निकाल दो. उससे पहले यू हैव टू चर्न द मिल्क. Figure 5.2 is showing the churning of the milk. After that, butter comes on the surface of the churned milk and then you can separate it out. Why do we need to separate substances? Because some of the substances, they are not useful for us, they are harmful for us, or sometimes you don't need them. कई बार क्या होता है, आपको उनकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए आप उनको क्या कर देते हो, सब्सटेंस कर देते, सेपरेट कर देते हो. Why you are separate stone from rice? Because to separate two different but useful components. What do we do with the separated components? We throw away the solid components. Like stones को आप throw कर देते हो rice में से. These all are the purpose for the separation. We will separate various things in our daily life. But what are the various methods of separation for the different types of substances mixed together? The first method of separation is hand picking. Hand picking, it brings a packet of food grain purchased from a shop to the classroom, or you can do at your home this. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find any one kind of grain on the surface on the sheet of paper, or are there the pieces of stone, husk, broken grains and particles? आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, अगर आप दाल भी लेके आते हो तो एक दाल में कई बार दूसरी दाल के भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, या फिर क्या होता है कि उसके अंदर स्टोन्स मिक्स होते हैं, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स, बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है उसके अंदर आपकी मिक्स हो सकती है. So you can use the method of hand picking and can separate the slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurity is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनकी फसल पक जाती है तो वो क्या करते हैं, दे विल टेक आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द मैच्योर्ड क्रॉप्स. वो क्रॉप में जो उनकी क्रॉप पक जाती है उसमें से अब वो क्या निकालते हैं, ग्रेन्स निकालते हैं. ठीक है, और वो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग. दिस इज शोन इन फिगर 5.4.
The process that is used to separate grain from stacks, etc., is called threshing. In this process, the stacks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks, machines, and are also used to thresh large quantities of grain. क्या होता है आपके पास कि पहले जमाने में क्या होता था, जो फार्मर थे दे विल स्ट्राइक the matured crop against a hard surface. By beating the matured crop, the grains will come out. जो grains होते थे वो क्या होते थे, वो उसमें से बाहर निकल जाते थे. पहले ऐसे होता था, लेकिन nowadays threshers are designed. Threshers डिजाइन किए गए हैं मशीन जिन्हें आप बोलते हैं, और उस मशीन को बोलते हैं हम थ्रेशर, which which helps to थ्रेश द ग्रेन्स, निकालने में ग्रेन्स में हमारी हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज विनोइंग. विनोइंग क्या होता है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. आपके लीव्स और किसी भी मिक्सचर के साथ अगर आप उनको मिक्स कर देते हो, एंड टेक दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. क्या आप इन सबको अलग अलग कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, क्योंकि आपने उसके अंदर पाउडर्ड लीव्स ऐड कर दिए. पाउडर लीव्स मतलब कि लीव्स को क्रश करके अगर आपने उसके अंदर मिक्स कर दिया तो. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आपकी गेहूं की फसल पक गई, आफ्टर थ्रेशिंग क्या होता है, कुछ सूखे सूखी घास या सूखे जो हस्क होते हैं वीट की, वो उसके साथ क्या हो जाती है, ग्रेन्स के साथ मिक्स हो जाती है. या फिर कोई ऐसी लाइटर इम्प्योरिटीज जो बहुत हल्की होती है, जो हवा से आप अलग कर सकते हो. तो यू कैन टेक द मिक्सचर ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और आप उसको हवा के आगे रखोगे तो क्या होगा, बाय विद द हेल्प ऑफ विंड. ये देखो, विद द हेल्प ऑफ विंड जो हैवियर पार्टिकल्स है दे विल फॉर्म अ पाइल, and the lighter particles with the help of wind they will thrown away like husk. जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो अलग से क्या बना लेंगे, आपके यहाँ पे पाइल बना लेंगे. ठीक है. तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर with the help of wind is called winnowing. उसको हम क्या बोलते हैं, is called winnowing. So this is again a third method of separation. First we have done hand picking, next is threshing, and third is winnowing. And the next method is sieving. Sieving का मतलब क्या होता है कि जैसे आप घर पे रोटी बनाने से पहले आटे को क्या करते हो, छानते हो विद द हेल्प ऑफ अ सीव. सीव का मतलब होता है छलनी. और सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. जो मोटे मोटे impurities होती है वो तो छलनी पे ही रह जाती हैं, और जो बाकी होती है वो they will pass through the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. फ्लोर मिल्स में क्या होता है, जो भी वीट में से इम्प्यूरिटीज निकाल के स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको सीव पे रखते हैं, ताकि जो और भी उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद अगर कोई इम्प्यूरिटीज बच गई है तो वो भी उसमें से स्ट्रेन हो जाए. यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ the man is doing using strainer. He is separating pebbles and stones from the sand. You have seen this type of activity on एनी कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कभी कोई घर वगैरह बन रहा होता है तो क्या करते हैं जो लेबर्स होते हैं ना, दे विल स्ट्रेन द sand from and they will separate the pebbles and stones from the sand by using this big sieve, or you can call it a strainer. Bring a sieve and small quantity of flour to the glass and sieve the flour to separate any impurities in it. Now you can make a fine powder of chalk pieces and mix it with flour. Can we separate the flour and powdered chalk by sieving? No, because sieving is only used when the components of mixture have different sizes. जब उनके पास क्या होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, तभी आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, sieving. Next is
sedimentation, decantation, and filtration. Sedimentation, decantation, and filtration, these processes they are interrelated to each other. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and handpicking. For example, there may be a lighter components like dust or soil particle in rice or pulses. How are such impurities separated from rices or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed when you add water to these. The impurities like dust particles get separated. These impurities go into the water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने देखा होगा कि अगर किसी पानी के अंदर आप मिट्टी मिक्स हो जाती है या फिर सैंड मिक्स हो जाती है तो यू विल लीव the water for some time, and after some time you notice that the sand will settle at the bottom of the vessel, and this process is, and after that you can separate that water and pour the water into the another vessel. Then the sand which is left behind is known as sediment, and the process is called sedimentation. And when the water along with the dust is removed, and then this process is called decantation. Or you can say that the decantation means you will separate the water drop wise from the sediment is known as decantation. Similar process is used when oil and water they are mixed together. If the mixture of the such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers, and the component that forms the top layer can be separated by the decantation. Decantation means you will pour the upper layer into the different vessel and you will separate it. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. You can try decantation also. It helps a little. Decantation, how you will try, leave the prepared tea for some time. जब आप prepared tea को थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो जो solid है it will settle at the bottom, और जो ऊपर वाली जो बनी हुई चाय होगी वो ऊपर आ जाएगी. उसको आप धीरे 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 करके क्या कर सकते हो, you can separate it into the another vessel or another beaker. That's why you can like separate these solid and liquid with the help of decantation. उससे आप क्या कर सकते हो, decantation से कर सकते हो उसको remove. Next is एक activity भी आप कर सकते हो. You can collect some muddy water into a glass and then leave it for some time, soil plus water, and then you can dissolve. You can use the another glass to put the water into the another glass. Then the sediment, the mud will left behind. The mud will left behind. This is known as the sedimentation process, and you can use to filter that water a filter paper, and using this funnel you will set the filter paper here, and this process is known as filtration. इस process को हम क्या कहते हैं, filtration. After decanted liquid you can use this process, that is filtration. And the next process is evaporation. Evaporation means when we evaporation means then the process of changing water into water vapors. Water into water vapors. For example, you will add 2 spoons of salt in this beaker, and you will heating the beaker containing salt water. Is there any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring it? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker?
It is only the salt. Water and salt को आप कैसे क्या कर सकते हो? Water and salt को आप separate कर सकते हो by the process of evaporation, because the process of evaporation means conversion of water into its vapor is called evaporation. Salt will left behind when the water will be evaporated from the mixture, and this is also done uh, when you obtain salt from the sea water, like near a seashore. These are the small pits made, and you will collect the sea water here. Due to heat of the sun, the water gets evaporated from these shallow pits, and the salt will left behind. Like you can obtain salt from the sea water by using the method of evaporation. Evaporation के method से भी आप क्या कर सकते हो? You can use that salt from the sea water. The next process is condensation. Condensation का मतलब क्या होता है आपका? The process of converting water vapor into its liquid form is called condensation. आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आपके घरों में अगर गर्म दूध के ऊपर आप कोई प्लेट रख देते हो तो after some time you have seen that there are small water droplets will be seen on the plate, and they will be like converted into the water when it is cool. So क्या होता है कि you can use that method of condensation to separate the liquid and solid. और next जो था, that is last, is the saturated solution. Saturated solution means the solution in which no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved means आपका वो वाला solution जिसमें आप कोई और सोल्यूट ऐड ही नहीं कर सकते. मैंने आपको बताया भी था सैचुरेशन मींस तृप्त, कि आपको इतना ज्यादा कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े, कि दैट यू आर बिकम सेटिस्फाइड. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होता है कि व्हेन यू ऐड like salt in a water, and you are going on adding the salt teaspoon number of times, but still you will get a point where no more salt can be added to the liquid. It means the liquid becomes saturated, the solution becomes saturated. These all are the methods of separation, and how you can separate all the mixtures which are like in your daily life. This methods of separation, how you will separate the substances, or way different substances can be separated by different methods. And we will discuss keywords and question answers in the next